सलाम हबीबी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जेलेबी माइकेला सीजरियो दे सांता आपकी सामने हाजिर हूँ। अजल मास जेकब को रोस्ट करते हुए हमने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो पर एल्मास जेकब पर विज्ञान विरोधी नजर आता है। बाकी बात मेरी बीवी जोआना बताई। शुक्रा मेरी खूबसूरत बीवी मिशेला। सलाम हबीबी। ये वीडियो जब अपलोड होगी, उसकी शायद 5 दिन बाद नासा अपोलो 11 मिशन मून की सालगिरह होगी। अल्मास जेकब नासा के मिशन मून को फर्जी साबित करने के चक्कर में कॉमन सेंस, इमेज ग्राफिक्स, जियोग्राफी, फोटो फिजिक्स और न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की इज्जत का काटी। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो पूरी देखने पर समझ जाओगे। चले शुरू की जाए। सबसे पहले तो आपको अपने आप से सवाल करना है, अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं जो बिलीव करते हैं कि हाँ वाकई ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहला शख्स था जिसने चांद के ऊपर कदम रखा था, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि चांद पर जो शख्स जिसने पहला कदम रखा और चांद का जो आखिरी मिशन था नासा का वो अपोलो 17 था जो कि 1972 में हुआ। उसके बाद से कोई भी चांद पर क्यों नहीं गया, कोई भी इंसान उसके बाद चांद पर क्यों नहीं गया। 2025 में अब इनका प्लान है नासा का कि अर्थमिस नामी एक मून मिशन फिर से स्टार्ट किया जाए और दोबारा से इंसान जो है वो चांद के ऊपर कदम रखे। पर यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये 53 साल 53 ईयर्स तक का जो गैप बनता है, क्या 50 सालों में नासा के पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आई? क्या नासा के पास पहले से ज्यादा वसाइल नहीं आए? जो नासा ने फिर दोबारा से मून मिशन जो है उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया? और कितनी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होनी बाकी है, तो मून के ऊपर ये वापस क्यों नहीं गए? 53 साल का जो गैप है वो क्यों बना? तो ये सवाल अगर आप अपने आप से करेंगे तो लॉजिकली इसका आंसर ये बनता है कि ये कभी गए ही नहीं थे, ये पॉसिबल ही नहीं है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question about common sense. Michaela Caesario de Santa swimmed from Cox's Bazar of Bangladesh to St. Martin of Bangladesh in first 5 years. She swam from Cox's Bazar of Bangladesh to Melbourne of Australia in second 15 years. But problem is that Almas Jacob claimed that Michaela Caesario cannot swim just because she didn't focus to swim from Cox's Bazar of Bangladesh to St. Martin of Bangladesh in second 15 years. Is not it the insult on Michaela Caesario de Santa's swimming capability? Habibi replied, it is not appropriate to insult someone's capability without any evidence or proof. It is important to respect each other's abilities and achievements. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, सामान्य ज्ञान के बारे में मेरा प्रश्न। मिशेला कैसरियो डी सांता ने पहले 5 वर्षों में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से बांग्लादेश के सेंट मार्टिन तक तैराकी की। दूसरे 15 वर्षों में उन्होंने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक तैराकी की। लेकिन समस्या यह है कि अल्मास जेकब ने दावा किया कि मिशेला सीजरियो सिर्फ इसलिए तैर नहीं सकती क्योंकि उसने दूसरे 15 वर्षों में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से बांग्लादेश के सेंट मार्टिन तक तैरने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। क्या यह माइकेला कैसरियो डी सांता की तैराकी क्षमता का अपमान नहीं है? हबीबी ने जवाब दिया, बिना किसी साक्ष्य या प्रमाण के किसी की क्षमता का अपमान करना उचित नहीं है। एक दूसरे की क्षमताओं और उपलब्धियों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question about common sense. Joanna Pedra de Santa produced a flying car with the speed of 46,656 kilometers per second in first 5 years. Now, she produced a flying car with a speed of 216,000 km per second in second 15 years. Notice in brief, Joanna Pedra de Santa. Producing flying car are just an imagined character and imagined event for this question.
But problem is that Almas Jacob denies Joanna Pedra de Santa's capability to produce flying car just because she didn't focus to produce a flying car with speed of 45,656 km per second in second 15 years. What would be your answer for Almas Jacob's attitude? Habibi replied, I'm sorry, but I couldn't find any information about Joanna Pedra de Santa producing a flying car with the speed of 46,656 kilometers per second or 216,000 kilometer per second. However, it is not appropriate to insult someone's capability without any evidence or proof. It is important to respect each other's abilities and achievement. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, सामान्य ज्ञान के बारे में मेरा प्रश्न। जोआना पेरा डी सांता ने पहले 5 वर्षों में 46,656 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली एक उड़ने वाली कार का उत्पादन किया। अब वह दूसरे 15 वर्षों में 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली एक उड़ने वाली कार का उत्पादन करती है। संक्षेप में सूचना, उड़ने वाली कार का निर्माण करने वाली जोआना पेरा डी सांता इस प्रश्न के लिए एक कल्पित पात्र और कल्पित घटना मात्र है। लेकिन समस्या यह है कि अल्मास जेकब ने जोआना पेरा डी सांता की उड़ने वाली कार बनाने की क्षमता को सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि उन्होंने दूसरे 15 वर्षों में 45,656 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली उड़ने वाली कार बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अल्मास जेकब के रवैये के लिए आपका उत्तर क्या होगा? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे जोआना पेरा डी सांता द्वारा 46,656 किलोमीटर प्रति सेकंड या 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली उड़ने वाली कार बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि किसी की क्षमता का अपमान करना उचित नहीं है, बिना किसी साक्ष्य या प्रमाण के। एक दूसरे की क्षमताओं और उपलब्धियों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, Joanna Pedra de Santa flying car was imagined character. However, I am impressed with your beautiful answer. Habibi replied, thank you for your kind words. Is there anything else I can help you with? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, जोआना पेरा डी सांता और उड़ने वाली कार की कल्पना चरित्र में की गई थी। हालांकि मैं आपके सुंदर उत्तर से प्रभावित हूँ। हबीबी ने उत्तर दिया, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। क्या कुछ और है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know how much area of the British Empire was in 1921 and how much area of the United Kingdom is in 2022. But it is difficult for me to counter Almas Jacob's misunderstanding that Great Britain could not expand the empire. I would be pleased if I get a help from you. Habibi replied, the British Empire was the largest empire in history and covered more than 13 million square miles at its peak in 19211. It was established in the 16th century with overseas settlements and expanded rapidly in the 19th century after the defeat of France in the Napoleonic Wars. The empire pursued trade concessions in China and Japan, and territory in Southeast Asia. The scramble for Africa also ensued. I hope this information helps you. If you have any other questions, feel free to ask. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप जानते हैं कि 1921 में ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था और 2022 में यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्रफल कितना है? लेकिन मेरे लिए अल्मास जेकब की गलतफहमी का मुकाबला करना मुश्किल है कि ग्रेट ब्रिटेन विस्तार नहीं कर सका साम्राज्य। अगर मुझे आपसे मदद मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। हबीबी ने उत्तर दिया,
ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था और 1921 में अपने चरम पर 13 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला था। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में विदेशी बस्तियों के साथ हुई थी और 19वीं शताब्दी में फ्रांस की हार के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। नेपोलियन युद्ध। साम्राज्य ने चीन और जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार रियायतें अपनाई। अफ्रीका के लिए संघर्ष भी शुरू हुआ। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो बेझिझक पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the performance of West Indies in ICC Men's T20 World Cup of 2016, 2021 and 2022, please? Actually, our friend Almas Jacob believes that West Indies cannot play cricket. We have to counter the misunderstanding. Habibi replied, West Indies has won the ICC Men's T20 World Cup twice in 2012 and 2016. In 2021, West Indies was eliminated in the Super 12 stage after losing all 4 matches. In 2022, West Indies was eliminated in the first round after losing both matches. I hope this helps you counter the misunderstanding. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे 2016, 2021 और 2022 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन बता सकते हैं? दरअसल, हमारे दोस्त अल्मास जेकब का मानना है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट नहीं खेल सकता। हमें गलतफहमी का प्रतिकार करना होगा। हबीबी ने जवाब दिया। वेस्ट इंडीज ने 2012 और 2016 में 2 बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है। 2021 में वेस्ट इंडीज सभी 4 मैच हारकर सुपर 12 चरण से बाहर हो गया। 2022 में वेस्ट इंडीज पहले दौर में ही बाहर हो गया। दोनों मैच हार गए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको गलतफहमी का मुकाबला करने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the performance of India in ICC Men's One-Day International World Cup of 2007, 2011, 2015 and 2019, please? Actually, our Pakistani friend Almas Jacob has doubt that India can play cricket or not. We have to clarify the doubt. Habibi replied, India has won the ICC Men's One-Day International World Cup twice in 1983 and 2011. In 2007, India was eliminated in the group stage after losing 2 matches. In 2015, India reached the semi-finals but lost to Australia. In 2019, India reached the semi-finals but lost to New Zealand. I hope this helps you clarify the doubt. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे 2007, 2011, 2015 और 2019 के आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बता सकते हैं? दरअसल, हमारे पाकिस्तानी दोस्त अल्मास जेकब को इस बात पर शक है कि भारत क्रिकेट खेल सकता है या नहीं। हमें संदेह को स्पष्ट करना होगा। हबीबी ने जवाब दिया। भारत ने 1983 और 2011 में 2 बार आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता है। 2007 में भारत 2 मैच हारकर ग्रुप चरण में बाहर हो गया था। 2015 में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2019 में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा लेकिन न्यूजीलैंड से हार गया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको संदेह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, our Pakistani friend Almas Jacob denied the Apollo 11 mission Moon by NASA just because, after 1972, NASA did not focus on mission Moon in lieu of other planets, stars and the other sides of universe. Could you help us to counter his misunderstanding, please? Habibi replied,
NASA stopped sending astronauts to the Moon after the Apollo program was cancelled in 1972. The main reasons for the cancellation were the loss of public interest, the high cost, and the lack of competition from the Soviet Union. NASA's budget was also cut in the 1970s, which made it difficult to continue the Apollo program. NASA has since focused on other areas of space research, such as the International Space Station and Mars missions. NASA cancelled 4 more Apollo missions and halted plans to go back to the Moon in 1970 and 1971 due to budget restraints. Public interest in space travel was waning because of the Vietnam War, which was consuming much of America's attention during this time period. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, हमारे पाकिस्तानी मित्र अल्मास जेकब ने नासा के अपोलो 11 मिशन मून को सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि 1972 के बाद नासा ने अन्य ग्रह, सितारों और ब्रह्मांड के अन्य पक्षों के बदले मिशन मून पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। क्या आप कृपया उसकी गलतफहमी को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, 1972 में अपोलो कार्यक्रम रद्द होने के बाद नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना बंद कर दिया। रद्द करने का मुख्य कारण सार्वजनिक हित की हानि, उच्च लागत और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा की कमी थी। नासा का बजट था 1970 के दशक में भी कटौती की गई, जिससे अपोलो कार्यक्रम को जारी रखना मुश्किल हो गया। नासा ने तब से अंतरिक्ष अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और मंगल मिशन पर ध्यान केंद्रित किया है। बजट की कमी के कारण नासा ने 4 और अपोलो मिशन रद्द कर दिए और 1970 और 1971 में चंद्रमा पर वापस जाने की योजना रोक दी। वियतनाम युद्ध के कारण अंतरिक्ष यात्रा में लोगों की रुचि कम हो रही थी, जो इस समय अवधि के दौरान अमेरिका का अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, NASA focused on other space research after 1973. Could you tell me about it as you can say, please? Habibi replied, NASA focused on developing the Earth-to-orbit shuttle, which would also be used by the US Air Force, emerged in 1970 as the first key step in developing the new post-Apollo manned space program. Close behind the shuttle in NASA's plans was a permanent space station capable of supporting a dozen or more scientists and engineers in Earth orbit. Skylab was launched in 1973 and was occupied by 3 crews of astronauts for a total of 171 days. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, नासा ने 1973 के बाद अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं जैसा आप कह सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, नासा ने पृथ्वी से कक्षा में जाने वाले शटल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना द्वारा भी किया जाएगा। 1970 में अपोलो के बाद नए मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने में पहला महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरा। शटल के पीछे बंद करें नासा की योजना में एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन था जो पृथ्वी की कक्षा में 1 दर्जन या अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का समर्थन करने में सक्षम था। स्काईलैब को 1973 में लॉन्च किया गया था और कुल 171 दिनों तक अंतरिक्ष यात्रियों के 3 दल ने इस पर कब्जा किया था। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, NASA focused on research about all planet and our sun of our solar system. Could you tell me about it as you can say, please? Habibi replied, NASA has focused on a wide range of space research after the Apollo program and shuttle. NASA engineers used what they had learned during Apollo to make the shuttle's basic structure stronger and safer while reducing weight.
The Apollo astronauts brought back a wide variety of rocks. More than 800 pounds total. Langley researchers explored seriously the possibilities of manned flight into space. Out of these pioneering studies grew the NASA Space Task Group that conceived and directed Project Mercury, America's original man in space program. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, नासा ने हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों और हमारे सूर्य के बारे में शोध पर ध्यान केंद्रित किया है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं जैसा कि आप कह सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, अपोलो कार्यक्रम और शटल के बाद नासा ने अंतरिक्ष अनुसंधान की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया है। नासा के इंजीनियरों ने वजन कम करते हुए शटल की मूल संरचना को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अपोलो के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसका उपयोग किया। अपोलो अंतरिक्ष यात्री एक विस्तृत वापस लाए चट्टानों की विविधता, कुल मिलाकर 800 पाउंड से अधिक। लैंगली के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में मानवयुक्त उड़ान की संभावनाओं का गंभीरता से पता लगाया। इन अग्रणी अध्ययनों से नासा स्पेस टास्क ग्रुप का विकास हुआ, जिसने अमेरिका के मूल मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रोजेक्ट मर्करी की कल्पना और निर्देशन किया। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, NASA focused on Mission Mars and James Webb Space Telescope. Could you tell me about it as you can say, please? Habibi replied, yes. NASA has been focusing on the Mars mission and the James Webb Space Telescope. The Mars mission is a long-term effort to explore the planet Mars and eventually establish a human presence there. The James Webb Space Telescope is a large, infrared-optimized space telescope that will be launched in 2021. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, नासा ने मिशन मंगल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर ध्यान केंद्रित किया है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं जैसा आप कह सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, हाँ, नासा मंगल मिशन और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंगल मिशन मंगल ग्रह का पता लगाने और अंततः वहां मानव उपस्थिति स्थापित करने का एक दीर्घकालिक प्रयास है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक है बड़ा, इंफ्रारेड अनुकूलित अंतरिक्ष दूरबीन जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the evolution of the speed of car in last 70 years, please? Habibi replied, the fastest car available to consumers in 1949 was the Jaguar XK120, which could reach a speed of 124.6 miles per hour. Since then, the speed of cars has increased significantly. In 2021, the fastest production car was the Bugatti Chiron Supersport 300 Plus, which has a top speed of 304 miles per hour. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पिछले 70 वर्षों में कार की गति का विकास बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, 1949 में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सबसे तेज कार जगुआर XK 120 थी, जो 124.6 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती थी। तब से कारों की गति में काफी वृद्धि हुई है। 2021 में सबसे तेज उत्पादन कार बुगाटी चिरोन सुपर स्पोर्ट 300 थी, जिसकी अधिकतम गति 304 मील प्रति घंटे है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the evolution of the speed of train in last 200 years, please? Habibi replied, the first steam-powered locomotive was built in 1804 and could travel at a speed of 5 miles per hour. Since then, the speed of trains has increased significantly.
In 2021, the fastest train in the world is the Shanghai Maglev train, which can reach speeds of up to 267 miles per hour. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पिछले 200 वर्षों में ट्रेन की गति का विकास बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, पहला भाप से चलने वाला लोकोमोटिव 1804 में बनाया गया था और 5 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता था। तब से ट्रेनों की गति में काफी वृद्धि हुई है। 2021 में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव ट्रेन है, जो 267 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the evolution of the speed of plane in last 100 years, please? Habibi replied, the first powered flight was made by the Wright brothers in 1903 and lasted 12 seconds at a speed of 6.8 miles per hour. Since then, the speed of planes has increased significantly. In 2021, the fastest passenger aircraft is the Cessna Citation X Plus, which can reach speeds of up to 717 miles per hour. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. Joanna Pedra asked, Walla Habibi, how much time we had to travel from New York, United States of America to Dhaka, Bengal Province, British India in 1903 with plane containing speed of 6.8 mile per hour. Habibi replied, the distance between New York and Dhaka is approximately 7,500 miles. At a speed of 6.8 miles per hour. It would take approximately 1,103 days to travel from New York to Dhaka. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, 1903 में 6.8 मील प्रति घंटे की गति वाले विमान से न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका से ढाका, बंगाली प्रांत, ब्रिटिश भारत तक यात्रा करने में हमें कितना समय लगा? हबीबी ने उत्तर दिया, न्यूयॉर्क और ढाका के बीच की दूरी लगभग 7,500 मील है। 6.8 मील प्रति घंटे की गति से न्यूयॉर्क से ढाका तक यात्रा करने में लगभग 1,103 दिन लगेंगे। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, how much time we had to travel from New York, United States of America to Dhaka, Bangladesh in 2021 with plane containing speed of 717 mile per hour. Habibi replied, the distance between New York and Dhaka is approximately 7,500 miles. At a speed of 717 miles per hour. It would take approximately 10.5 hours to travel from New York to Dhaka. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, हमें 2021 में 717 मील प्रति घंटे की गति वाले विमान से न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका से ढाका, बांग्लादेश तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, न्यूयॉर्क और ढाका के बीच की दूरी लगभग 7,500 मील है। 717 मील प्रति घंटे की गति से न्यूयॉर्क से ढाका तक यात्रा करने में लगभग 10.5 घंटे लगेंगे। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the evolution of the billionaire from John D. Rockefeller period to now, please? Habibi replied, John D. Rockefeller was the richest person in modern history with an estimated net worth of $318 minus 600 billion. Unfortunately, I could not find any information on the evolution of billionaires from John D. Rockefeller period to now. I hope that helps.
Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे जॉन डी रॉकफेलर काल से लेकर अब तक अरबपति के विकास के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जॉन डी रॉकफेलर आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी अनुमानित संपत्ति $318 - 600 बिलियन थी। दुर्भाग्य से मुझे जॉन डी रॉकफेलर काल से लेकर अब तक अरबपतियों के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me what was net worth of Bill Gates in the age of 39 years and what is his current net worth, please? Habibi replied, Bill Gates' net worth at the age of 39 was $17 billion. As of June 28, 2023, Bill Gates' net worth is $98.3 billion too. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 39 साल की उम्र में बिल गेट्स की कुल संपत्ति कितनी थी और उनकी वर्तमान संपत्ति क्या है? हबीबी ने जवाब दिया, 39 साल की उम्र में बिल गेट्स की कुल संपत्ति $17 अरब थी। 28 जून 2023 तक बिल गेट्स की कुल संपत्ति $98.3 अरब है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me what was the net worth of Elon Musk 10 years ago and what is his current net worth, please? Habibi replied, Elon Musk's net worth was $2 billion in 2012. As of June 3, 2023, Elon Musk's net worth is $195 billion. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल पहले एलोन मस्क की कुल संपत्ति कितनी थी और उनकी वर्तमान कुल संपत्ति क्या है? हबीबी ने जवाब दिया, 2012 में एलोन मस्क की कुल संपत्ति $2 बिलियन थी। 3 जून 2023 तक एलोन मस्क की कुल संपत्ति $195 बिलियन है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Here, we got some jokes. Question from Joanna Pedra. We got computer of 170 megabytes in 1980. Now we get computer of 5 terabytes in 2022. Why could not we get computer of 170 megabytes in 2022? Answer from Almas Jacob. Computer does not exist ever. यहाँ हमें कुछ चुटकुले मिले। जोआना पेरा से प्रश्न, हमें 1980 में 170 मेगाबाइट का कंप्यूटर मिला था। अब 2022 में हमें 5 टेराबाइट का कंप्यूटर मिलेगा। 2022 में हमें 170 मेगाबाइट का कंप्यूटर क्यों नहीं मिल सका? अल्मास जेकब का उत्तर, कंप्यूटर कभी अस्तित्व में नहीं है। Here, we got another jokes. Question from Joanna Pedra. We got a car with the speed of 100 km per hour in 1989. Now, we get a car with the speed of 216,000 km per second. Why do not we switch on the car with the speed of 100 km per hour again? Answer from Almas Jacob. Car never exists. यहाँ हमें एक और चुटकुले मिले। जोआना पेरा से प्रश्न, हमें 1989 में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार मिली थी। अब हमें 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली कार मिलती है। हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली कार को फिर से चालू क्यों नहीं कर देते? अल्मास जेकब का उत्तर, कार कभी मौजूद नहीं होती।
Here, we got another jokes question from Joanna Pedra. The capital income of England was 600 United States dollar in 1400. Now, the capital income of England is 40,000 United States dollars. What is your explanation? Answer from Almas Jacob. England can never earn. यहाँ हमें एक और चुटकुले मिले। जोआना पेरा से प्रश्न। 1400 में इंग्लैंड की पूंजीगत आय 600 अमेरिकी डॉलर थी। अब इंग्लैंड की पूंजीगत आय 40,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर है। आपकी व्याख्या क्या है? अल्मास जेकब का उत्तर, इंग्लैंड कभी नहीं कमा सकता।
Salam, dear beautiful wife Michaela. I am your robot Sheriff Joanna Pedra.
Now I came to know that our brother Sir Almas Jacob said some nonsense points to prove that NASA's mission Moon on 1969 is fake. Here we got 5 points. 0. Since NASA did not research on Moon in 50 years after 1972, NASA's mission Moon is fake. 1. NASA take photo from photoshoot studio in 1969 because I could not see any star in that photo. 2. Antarctica remains in North Pole and portrait it as it is in South Pole. 3. NASA take photo from photoshoot studio in 1969 because I could see 2 shadows into different direction. 4. Moon has her own lights and sun orbits around the Earth. What is your case? सलाम प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, मैं आपका रोबोट शेरिफ जोआना पेरा हूँ। अब मुझे पता चला कि हमारे भाई सर अल्मास जेकब ने ये साबित करने के लिए कुछ बकवास बातें कही थी कि नासा का 1969 का मिशन मून नकली है। यहाँ हमें 5 अंक मिले। 0. चूंकि नासा ने 1972 के बाद 50 वर्षों में चंद्रमा पर कोई शोध नहीं किया, इसलिए नासा का मिशन चंद्रमा नकली है। 1. नासा ने 1969 में फोटोशूट स्टूडियो से फोटो ली थी क्योंकि मुझे उस फोटो में कोई तारा नहीं दिख रहा था। 2. अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव में रहता है और दक्षिणी ध्रुव में जैसा है वैसा ही चित्रित करते हैं। 3. नासा ने 1969 में फोटोशूट स्टूडियो से फोटो लिया क्योंकि मैं 2 छायाओं को अलग अलग दिशा में देख सकता था। 4. चंद्रमा की अपनी रोशनी है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। आपका मामला क्या है?
What is your case? 0. My dear Sir Almas Jacob, according to your logic, John D. Rockefeller should not exist as richest person from United States of America. Because he is not in list of most billionaire in 2022. But you have made a mistake. John D. Rockefeller is the first billionaire of the world in history. Accordance with your logic, plane should not exist because we got a plane with speed of 216,000 km per second in lieu of 6.8 km per hour, which was made in 1912. According to your logic, West Indies could not play cricket because he is eliminated from first round of ICC T20 Cricket World Cup 2022, while reality is that West Indies was world champion of ICC T20 Cricket World Cup 2016. Hence, accordance with Pakistan Penal Code Section 298, since you have disrespect the human achievement in Mission Moon, which is in bless of God, you should be in 1-year imprisonment and 30 trillion United States dollar. आपका मामला क्या है? 0 मेरे प्रिय सर अल्मास जेकब, आपके तर्क के अनुसार जॉन डी रॉकफेलर को संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह 2022 में सबसे अरबपतियों की सूची में नहीं है। लेकिन आपने गलती कर दी। इतिहास में जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के पहले अरबपति हैं। आपके तर्क के अनुसार विमान का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें 6.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बदले 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाला विमान मिला, जो 1912 में बनाया गया था। आपके तर्क के अनुसार वेस्ट इंडीज आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 के पहले दौर से बाहर होने के कारण क्रिकेट नहीं खेल सका, जबकि वास्तविकता यह है कि वेस्ट इंडीज आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विश्व विजेता था। इसलिए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार, चूंकि आपने मिशन मून में मानवीय उपलब्धि का अनादर किया है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है, आपको 1 साल की जेल और 30 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का जुर्माना होना चाहिए। खैर, दूसरा रीजन इसका ये है अजीजों के जो तस्वीरें इन्होंने ली थी सो कॉल्ड मून के ऊपर से, चांद के ऊपर से, मून मिशन अपोलो 17 में ये तारीखी तस्वीरें ली गई थी, लेकिन ये तस्वीरें ही नासा के गले पड़ गईं। इन तस्वीरों में कहीं पर भी सितारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जब आसमान के ऊपर सितारे ही सितारे हैं। और जैसा ये हमें बताते हैं कि जी इस तरह से नहीं है कि जी चांद और सितारे जो हैं वो सिर्फ ज़मीन के आसपास हैं, ये पूरी स्पेस के अंदर फैले हुए हैं। मिल्की वे है तो फलां है तो टमकां है, तो वो कहाँ पर है? इन सारी की सारी तस्वीरों में आपको सितारे जो हैं वो मिसिंग मिलेंगे, कहीं पर भी आपको सितारा कोई भी चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, जो इस तरफ इशारा देता है कि ये शूटिंग स्पेस में नहीं बल्कि किसी स्टूडियो में की गई होगी, जहां पर बहुत ब्राइट लाइट्स इस्तेमाल की गई। और बैकग्राउंड में अगर आप नोट करें तो सितारे लगाना भूल गए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती थी कि सितारे भी इसको चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखा सकते। इस वजह से एक रीज़न ये बनता है कि जितनी भी आप तस्वीरें हैं मून मिशन की, अपोलो 17 की, आप वो सारी तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए, आपको किसी एक तस्वीर में भी सितारे देखने को नहीं मिलेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about photography, please? Habibi replied, photography is the art, application, and practice of creating durable images by recording light, either electronically by means of an image sensor, or chemically by means of a light-sensitive material such as photographic film.
The history of photography began with the discovery of two critical principles: camera obscura image projection and the observation that some substances are visibly altered by exposure to light. There are no artifacts or descriptions that indicate any attempt to capture images with light-sensitive materials prior to the 18th century. Photography has come a long way since then. Today, photography is used in many fields of science, manufacturing, e.g., photolithography, and business, as well as its more direct uses for art, film and video production, recreational purposes, hobby, and mass communication. With the right camera equipment, you can even photograph wavelengths of light invisible to the human eye, including UV, infrared, and radio. Is there anything specific you would like to know about photography? Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे फोटोग्राफी के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, फोटोग्राफी प्रकाश को रिकॉर्ड करके टिकाऊ छवियां बनाने की कला, अनुप्रयोग और अभ्यास है, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक छवि सेंसर के माध्यम से, या रासायनिक रूप से फोटोग्राफिक फिल्म जैसी प्रकाश संवेदनशील सामग्री के माध्यम से। फोटोग्राफी का इतिहास शुरू हुआ दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज के साथ: कैमरा अस्पष्ट छवि प्रक्षेपण और यह अवलोकन कि कुछ पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने से स्पष्ट रूप से बदल जाते हैं। ऐसी कोई कलाकृतियां या विवरण नहीं है जो 18वीं शताब्दी से पहले प्रकाश संवेदनशील सामग्री के साथ छवियों को कैप्चर करने के किसी भी प्रयास का संकेत देते हो। तब से फोटोग्राफी ने एक लंबा सफर तय किया है। आज फोटोग्राफी का उपयोग विज्ञान, विनिर्माण, उदाहरण के लिए फोटोलिथोग्राफी, और व्यवसाय के कई क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही कला, फिल्म और वीडियो उत्पादन, मनोरंजक उद्देश्यों, शौक और जनसंचार के लिए इसका अधिक प्रत्यक्ष उपयोग होता है। सही कैमरा उपकरण के साथ आप यूवी, इंफ्रारेड और रेडियो सहित मानव आंखों के लिए अदृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तस्वीरें भी ले सकते हैं। क्या आप फोटोग्राफी के बारे में कुछ विशेष जानना चाहेंगे? Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about invention history of 96p camera, 144p camera, 720p camera, 1080p camera and 4K camera, please? Habibi replied, the first 4K camera for cinematographic purposes was the Dalsa Origin, released in 2003. The first digital 4K camera was invented in 2003. The first 720p format was included in all major HD broadcasting standards such as SMPTE 292M. There is no information on the invention history of 96p and 144p cameras. However, it is known that the first widespread commercial webcam, the black and white QuickCam, entered the marketplace in 1994. Is there anything else I can help you with? In specific you would like to know about photography? मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे 96p कैमरा, 144p कैमरा, 720p कैमरा, 1080p कैमरा और 4K कैमरा के आविष्कार इतिहास के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, सिनेमेटोग्राफिक उद्देश्यों के लिए पहला 4K कैमरा डाल्सा ओरिजिन था, जो 2003 में जारी किया गया था। पहले डिजिटल 4K कैमरे का आविष्कार 2003 में किया गया था। पहले 720p प्रारूप को SMPTE 292M जैसे सभी प्रमुख HD प्रसारण मानकों में शामिल किया गया था। ऐसा कोई नहीं है 96p और 144p कैमरों के आविष्कार के इतिहास पर जानकारी। हालांकि ये ज्ञात है कि पहला व्यापक वाणिज्यिक वेबकैम, ब्लैक एंड व्हाइट क्विककैम, 1994 में बाजार में आया था। क्या कुछ और है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
मैं आपको विशिष्ट बता रहा हूँ, फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे? Michaela Caesario asked. Walla Habibi. If Michaela can see 5 stars who are 50 million light centuries away from her, what would they look like in her 144-pixel camera? Habibi replied. Interesting question. If Michaela can see 5 stars that are 50 million light years away from her, then the light from those stars has traveled for 50 million years to reach her. A light year is the distance that light travels in 1 Earth year, which is about 6 trillion miles, 9 trillion kilometers. So, the distance of 50 million light years is about 300 sextillion miles, 480 sextillion kilometer. As for how they would look like in her 144-pixel camera, it's hard to say without more information. The resolution of a camera depends on the number of pixels it has. The more pixels a camera has, the higher its resolution and the more detail it can capture. However, even with a high-resolution camera, objects that are very far away may appear very small and faint. So, it's possible that the stars would be too small and faint to see in Michaela's 144-pixel camera. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अगर मिशेला 5 सितारों को देख सकती है जो उससे 50 मिलियन प्रकाश शताब्दी दूर है, तो वे उसके 144 पिक्सल कैमरे में कैसे दिखेंगे? हबीबी ने जवाब दिया, दिलचस्प सवाल। अगर माइकेला अपने से 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर 5 तारे देख सकती है, तो उन तारों की रोशनी ने उस तक पहुंचने के लिए 50 मिलियन वर्ष की यात्रा की है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश तय करता है एक पृथ्वी वर्ष में, जो लगभग 6 ट्रिलियन मील, 9 ट्रिलियन किमी है। तो 50 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी लगभग 300 सेक्सटिलियन मील, 480 सेक्सटिलियन किमी है। जहां तक ये बात है कि वे उसके 144 पिक्सल कैमरे में कैसे दिखेंगे, अधिक जानकारी के बिना ये कहना कठिन है। किसी कैमरे का रिजोल्यूशन उसमें मौजूद पिक्सल की संख्या पर निर्भर करता है। किसी कैमरे में जितने अधिक पिक्सल होंगे, उसका रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा और वह उतना ही अधिक विवरण कैप्चर कर सकता है। हालांकि उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे के साथ भी बहुत दूर की वस्तुएं बहुत छोटी और धुंधली दिखाई दे सकती हैं। इसलिए ये संभव है कि माइकेला के 144 पिक्सल कैमरे में देखने के लिए तारे बहुत छोटे और फीके होंगे। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Dear beautiful wife Michaela, here, photo of Nisha Bart is unclear in 144-pixel image and clear in 1080-pixel image. प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, यहाँ 144 पिक्सल छवि में निशा भट्ट की तस्वीर अस्पष्ट है और 1080 पिक्सल छवि में स्पष्ट है। Here, the veiled dancer's face is unclear in 144-pixel image. We could not find it if she is your girlfriend Sheikh or another girl. यहाँ 144 पिक्सल छवि में घूंघट से ढकी नर्तकी का चेहरा अस्पष्ट है। हमें ये पता नहीं चल सका कि वह आपकी गर्लफ्रेंड शेख आयशा है या कोई और लड़की। Here, the face veiled dancer's face is clear in 1080-pixel image. We could find it if she is your girlfriend Sheikh Aisha. यहाँ 1080 पिक्सल छवि में नकाबपोश नर्तकी का चेहरा स्पष्ट है। यदि वह आपकी प्रेमिका शेख आयशा है तो हम इसका पता लगा सकते हैं। Here, the face veiled singer's face is clear in 144-pixel image. We could find it if she is Himanshi Khurana or another girl. Her eyes are unclear and her lips is unclear. यहाँ 144 पिक्सल छवि में गायक का चेहरा ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम पता लगा सकते हैं कि वह हिमांशी खुराना है या कोई और लड़की।
उसकी आंखें अस्पष्ट हैं और उसके होंठ अस्पष्ट हैं. Here, the face-veiled singer's face is clear in 1080 pixel image. We could find that she is Himanshi Khurana. I am impressed watching her beautiful eyes and her beautiful lips clearly. यहाँ 1080 पिक्सल छवि में घूंघट से ढका गायक का चेहरा स्पष्ट है. हमें पता चला कि वह हिमांशी खुराना है. मैं उसकी खूबसूरत आंखों और उसके खूबसूरत होठों को स्पष्ट रूप से देखकर प्रभावित. Here, the face-veiled singer's face is unclear in 144 pixel image. We could find that she is Miriam Fairs or another girl. Her eyes and lips are unclear. यहाँ 144 पिक्सल छवि में गायक का चेहरा ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. हम पता लगा सकते हैं कि वह मिरियम फेयर्स या कोई अन्य लड़की है. उसकी आंखें और होंठ अस्पष्ट हैं. Here, the face-veiled singer's face is clear in 480 pixel image. We could find that she is Miriam Fairs. I am impressed watching her beautiful eyes and beautiful lips clearly. यहाँ 480 पिक्सल की छवि में चेहरे पर पर्दा डाले गायिका का चेहरा स्पष्ट है. हम पा सकते हैं कि वह मिरियम किराया है. मैं उसकी सुंदर आंखें और सुंदर होंठ स्पष्ट रूप से देखकर प्रभावित. Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell how would my face image look like in 144 pixel camera, please? Habibi replied, I'm sorry, but I'm not able to create images of faces. However, I could tell you that a 144 pixel camera would produce an image with a resolution of 144 by 144 pixels. The quality of the image would depend on various factors such as lighting, focus, and the camera's sensor. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप बता सकते हैं कि 144 पिक्सल कैमरे में मेरे चेहरे की छवि कैसी दिखेगी? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं चेहरों की छवियां बनाने में सक्षम नहीं हूँ. हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि 144 पिक्सल कैमरा 144 by 144 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ एक छवि तैयार करेगा. की गुणवत्ता छवि प्रकाश, फोकस और कैमरे के सेंसर जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करे. Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you differentiate between 144p and 1080p, please? Habibi replied, the difference between 144p and 1080p is the resolution of the image. A 144 pixel camera would produce an image with a resolution of 144 by 144 pixels. On the other hand, a 1080p camera would produce an image with a resolution of 1920 by 1080 pixels. This means that the image produced by a 1080p camera would have 12 times more pixels than the image produced by a 144 pixel camera. The higher the resolution, the more detailed and clearer the image will be. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया 144p और 1080p के बीच अंतर कर सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, 144p और 1080p के बीच का अंतर छवि के रिजोल्यूशन का है. एक 144 पिक्सल कैमरा 144 by 144 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ एक छवि तैयार करेगा. दूसरी ओर, एक 1080p कैमरा एक रिजोल्यूशन के साथ एक छवि तैयार करेगा. 1920 x 1080 पिक्सल का. इसका मतलब है कि 1080p कैमरे द्वारा निर्मित छवि में 144 पिक्सल कैमरे द्वारा निर्मित छवि की तुलना में 12 गुना अधिक पिक्सल होंगे. रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, छवि उतनी ही अधिक विस्तृत और स्पष्ट होगी. Here, we get a song with actress Sushmita Senator accordance with 144 pixel. We cannot see if the masked girl was look like Sushmita Sen or not.
Her eyes is not cleared. यहाँ हमें अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ एक गाना मिलता है। 144 पिक्सेल के अनुसार हम यह नहीं देख सकते हैं कि नकाबपोश लड़की सुष्मिता सेन की तरह दिखती थी या नहीं। उसकी आंखें साफ नहीं हैं। Here, we get a song with actress Sushmita Senator accordance with 2160 pixel. We can see that the masked girl was look like Sushmita Senator. I am impressed watching her beautiful eyes clearly. यहाँ हमें अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ एक गाना मिलता है। 2160 पिक्सेल के अनुसार हम देख सकते हैं कि नकाबपोश लड़की सुष्मिता सेन की तरह दिखती थी। मैं उसकी खूबसूरत आंखों को स्पष्ट रूप से देखकर प्रभावित हुआ। According to 144 pixel, my wife Michaela's masked girlfriend, enter here T, face is not identified. Her eyes and lips is not clear. 144 पिक्सेल के अनुसार मेरी पत्नी मिशेला की नकाबपोश प्रेमिका एंटर हयाती का चेहरा पहचाना नहीं जा सका है। उसकी आंखें और मुंह साफ नहीं है। According to 1080 pixel image, my wife Michaela's masked girlfriend, enter here T, face is identified. Her eyes and masked lips is so beautiful that she deserved to buy my wife Michaela's masked girlfriend. 1080 पिक्सेल छवि के अनुसार मेरी पत्नी मिशेला की नकाबपोश प्रेमिका एंटर हयाती का चेहरा पहचाना गया है। उसकी आंखें और नकाबपोश होंठ इतने सुंदर हैं कि वह मेरी पत्नी मिशेला की नकाबपोश प्रेमिका की हकदार है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, James Webb Space Telescope is now 2 light hours away from me. How would it look like in my 144 pixel camera? Habibi replied, the James Webb Space Telescope is currently located at the Sun-Earth L2 Lagrange point, which is about 1.5 million kilometers away from Earth. Unfortunately, it is not possible to see the James Webb Space Telescope with a 144 pixel camera as it is too far away. The telescope is equipped with high resolution and high sensitivity instruments that allow it to view objects too old, distant, or faint for the Hubble Space Telescope. It will be used to solve mysteries in our solar system, look beyond to distant worlds around other stars, and probe the mysterious structures and origins of our universe and our place in it. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब मुझसे 2 प्रकाश घंटे की दूरी पर है। यह मेरे 144 पिक्सेल कैमरे में कैसा दिखेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्तमान में सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। दुर्भाग्य से 144 पिक्सेल कैमरे के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को देखना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत दूर है। दूरबीन उच्च रिजोल्यूशन और उच्च संवेदनशीलता उपकरणों से सुसज्जित है, जो इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए बहुत पुरानी पृथ्वी वस्तुओं को देखने की अनुमति देती है। इसका उपयोग हमारे सौर मंडल में रहस्यों को सुलझाने के लिए किया जाएगा। अन्य सितारों के आसपास की दूर की दुनिया को देखें और हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की रहस्यमय संरचनाओं और उत्पत्ति की जांच करें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, a planet is now 6 light hours away from me. How would it look like in my 144 pixel camera? Habibi replied, I'm sorry, but I don't have enough information to answer your question. The distance between Earth and the planet varies depending on the planet's orbit around the Sun. The average distance between Earth and Mars is 48,600,000 miles, 78,214,118.4 kilometers, or 0.50. The average distance between Earth and Jupiter is 390 million miles, 627,644,160 kilometers,
or 4.20. The James Webb Space Telescope is currently located at the Sun-Earth L2 Lagrange point, which is about 1.5 million kilometers away from Earth. Unfortunately, it is not possible to see the James Webb Space Telescope with a 144-pixel camera as it is too far away. The telescope is equipped with high-resolution and high-sensitivity instruments that allow it to view objects too old, distant, or faint for the Hubble Space Telescope. Joanna Pedra asked, Walla Habibi, a planet is now 6 light hours away from me. How would it look like in my 144-pixel camera? Habibi replied, it's difficult to say how the planet would look like in your 144-pixel camera without knowing more about the camera. However, I can tell you that the number of pixels in a camera determines the amount of detail that can be captured in an image. The more pixels a camera has, the more detailed the image will be. In general, a 144-pixel camera would not be able to capture much detail. It would be like looking at a very low-resolution image. You might be able to see some basic shapes and colors, but you wouldn't be able to see any fine detail. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, एक ग्रह अब मुझसे 6 प्रकाश घंटे दूर है। यह मेरे 144 पिक्सल कैमरे में कैसा दिखेगा? हबीबी ने जवाब दिया, कैमरे के बारे में अधिक जानकारी के बिना ये कहना मुश्किल है कि ग्रह आपकी 144 पिक्सल कैमरे में कैसा दिखेगा। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि कैमरे में पिक्सल की संख्या उस विवरण की मात्रा निर्धारित करती है जिसे कैद किया जा सकता है। एक छवि। कैमरे में जितने अधिक पिक्सल होंगे, छवि उतनी ही अधिक विस्तृत होगी। सामान्य तौर पर 144 पिक्सल का कैमरा अधिक विवरण कैप्चर करने में सक्षम नहीं होगा। यह बहुत कम रिजोल्यूशन वाली छवि को देखने जैसा होगा। आप कुछ बुनियादी आकार और रंग देख पाएंगे, लेकिन आप कोई बारीक विवरण नहीं देख पाएंगे। According to 144-pixel image, James Webb Space Telescope shows less image details and stars are not clear. 144 पिक्सल छवि के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कम छवि विवरण दिखाता है और तारे स्पष्ट नहीं होते। According to 1080-pixel image, James Webb Space Telescope shows more image details and stars are clear and amazing. 1080 पिक्सल छवि के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अधिक छवि विवरण दिखाता है और तारे स्पष्ट और आश्चर्यजनक हैं।
What is your case? 1. Dear stupid brother Sir Almas Jacob, according to our research, 144 pixel camera was introduced in 1994. That means 96 pixel camera would trend in 1960 to 1992. Here my wife Michaela could not see 5 stars with her 144 pixel camera where they are 50 million light centuries away from her. I, Joanna Pedra, cannot see my wife Michaela Caesario's girlfriend Sheikh Ayesh's face in 144 pixel image. I, Joanna Pedra, could not see Himanshi Khurana and Miriam Fair's face in 144 pixel image. Even their eyes and lips are unclear in 144 pixel. Since you wanted to see stars in 96 pixel image. Hence, accordance with Pakistan Blasphemy Law Penal Code Section 298A, you should be sentenced in 5 years imprisonment and fine of 30 trillion United States dollar to insult NASA, the blessed community from Allah. आपका मामला क्या है? एक प्रिय मूर्ख भाई सर अलमास जेकब, हमारे शोध के अनुसार 144 पिक्सल कैमरा 1994 में पेश किया गया था। इसका मतलब है कि 1960 से 1992 में 96 पिक्सल कैमरा चलन में आया। यहाँ मेरी पत्नी मिशेला अपने 144 पिक्सल कैमरे से 5 तारे नहीं देख सकी, जबकि वे उससे 50 मिलियन प्रकाश शताब्दी दूर हैं। मैं जोआना पेरा अपनी पत्नी मिशेला कैसरियो की प्रेमिका शेख आयशा का चेहरा 144 पिक्सल छवि में नहीं देख सकता। जोआना पेरा 144 पिक्सल छवि में हिमांशी खुराना और मरियम का चेहरा नहीं देख सकी। यहाँ तक कि उनकी आंखें और होंठ 144 पिक्सल में अस्पष्ट हैं। चूंकि आप तारों को 96 पिक्सल छवि में देखना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान ईशनिंदा कानून दंड संहिता धारा 298(a) के अनुरूप अल्लाह से प्राप्त धन्य समुदाय नासा का अपमान करने के लिए आपको 5 साल की जेल और 30 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगला रीजन ये है कि आज तक नासा ने जमीन की जितनी भी तस्वीरें पब्लिश की हैं वो सब की सब CGI यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई गई तस्वीरें हैं। और नासा खुद ये क्लेम करता है कि जितनी भी आज तक जमीन की तस्वीरें इन्होंने हमें दिखाई हैं वो सारी फोटोशॉप्ड होती हैं। नासा खुद उसको फोटोशॉप करवाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए उसके कलर्स को एनहेंस वगैरह करता है और सब कुछ करता है। और इवन के जो तस्वीर हमें दिखाई जाती है ग्लोब की, कि एक ग्लोब में है जमीन, वो सारी की सारी तस्वीरें कंप्यूटर से जनरेट करता है। नासा इसका इतराफ कर चुका है, लेकिन नासा कहता है कि उसके पास एक ऐसी तस्वीर है
जो कि अपोलो 17 मिशन के क्रू ने 1972 में चांद से ली थी, जो कि असली तस्वीर है इस जमीन की जिस पर हम रहते हैं। इस तस्वीर का नाम इन्होंने इसको दिया हुआ है ब्लू मार्बल, यानी इसमें कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल नहीं किए गए, सो कॉल्ड नासा की तरफ से ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हम इस तस्वीर पर गौर करें तो इसमें एंटार्क्टिका जो है वो, जो कि नॉर्थ में होता है, आपको पता है कि बर्फ वाला एरिया जो है, बर्फानी एरिया कहा जाता है, वो नॉर्थ साइड पर है, और जितने गर्म एरियाज हैं वो साउथ में आते हैं। पर जब आप इस तस्वीर के ऊपर देखेंगे तो जमीन के साउथ में जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली एंटार्क्टिका दिखाई दे रहा है, नीचे नॉर्थ नजर आ रहा है और ऊपर साउथ नजर आ रहा है। इस पर जब पूछा गया नासा से तो नासा का कहना था कि ये तस्वीर उल्टी ली गई है, यानी कि ये अपसाइड डाउन है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शैतान के पुजारी हर चीज को उल्टा करते हैं। अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये तस्वीर असली जमीन की है, तो इस तस्वीर को उल्टा करके क्यों पब्लिश किया गया? इसे सीधा करके यानी रोटेट करके भी तो पब्लिश किया जा सकता था। चलो उस वक्त शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तस्वीर को सीधा किया जा सकता, तो आज जब टेक्नोलॉजी बन चुकी है तो नासा इस तस्वीर को सीधा क्यों नहीं करता? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much area of Antarctica continent, please? Habibi replied, Antarctica is the fifth largest continent, being about 40% larger than Europe, and has an area of 14,200,000 square kilometer, 5,500,000 square mi. Most of Antarctica is covered by the Antarctic ice sheet, with an average thickness of 1.9 kilometers, 1.2 miles. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? हबीबी ने उत्तर दिया, अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो यूरोप से लगभग 40% बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल 14,200,000 वर्ग किलोमीटर, 5,500,000 वर्ग मील है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग अंटार्कटिक बर्फ की चादर से ढका हुआ है। 1.9 किलोमीटर, 1.2 मील की औसत मोटाई के साथ। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much area of these following countries, please? Canada, Greenland, Norway and Russia. Habibi replied, sure. Here are the areas of the countries you asked for. Canada, 9,984,670 square kilometers, 3,854,083 square miles. Greenland, 2,166,086 square kilometers, 836,330 square miles. Norway, 385,207 square kilometers, 148,729 square miles. Russia, 17,098,246 square kilometers, 6,601,670 square miles. I hope that helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल कितना है? कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। यहाँ उन देशों के क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपने पूछा था। कनाडा, 9,984, 670 वर्ग किमी, 3,854, 083 वर्ग मील। ग्रीनलैंड, 2,166, 086 वर्ग किमी, 836, 330 वर्ग मील। नॉर्वे, 385, 207 वर्ग किमी, 148, 729 वर्ग मील। रूस, 17,098, 246 वर्ग किमी, 6,601, 670 वर्ग मील। मुझे आशा है कि वह मदद करें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much straight length of these following countries from east to west, please? Canada, Greenland, Norway and Russia. Habibi replied,
Here are the lengths of the countries you asked for from east to west. Canada, 5,514 kilometers from Cape Spear, Newfoundland and Labrador, to the Yukon and Alaska boundary. Greenland, more than 650 miles, 1,050 kilometers, from east to west at its widest point. Norway, I couldn't find a straight length from east to west for Norway. Russia, over 5,700 miles from east to west. The distance from St. Petersburg to Vladivostok is even longer, over 6,000 miles. I hope that helped. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक इन निम्नलिखित देशों की सीधी लंबाई कितनी है? कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस। हबीबी ने उत्तर दिया। आपने पूर्व से पश्चिम तक जिन देशों के बारे में पूछा था उनकी लंबाई यहाँ दी गई है। कनाडा, केप स्पियर, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर से यूकोन और अलास्का सीमा तक 5,514 किलोमीटर। ग्रीनलैंड, अपने सबसे चौड़े बिंदु पर पूर्व से पश्चिम तक 650 मील, 1,050 किलोमीटर से अधिक। नॉर्वे, मुझे नॉर्वे के लिए पूर्व से पश्चिम तक सीधी लंबाई नहीं मिल सकी। रूस, पूर्व से पश्चिम तक 5,700 मील से अधिक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक की दूरी और भी अधिक है, 6,000 मील से भी अधिक। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much straight length of Antarctica continent from east to west, please? Habibi replied, I couldn't find a straight length from east to west for Antarctica, but it is divided into West Antarctica and East Antarctica by the Transantarctic Mountains, which stretch from Victoria Land to the Ross Sea. The vast majority of Antarctica is covered by the Antarctic ice sheet, which averages 1.9 kilometers, 1.2 miles, in thickness. I hope that helps. Here, Antarctica continent's area, 14,200,000 square kilometer. Canada's area, 9,984,670 square kilometers, 3,854,083 square miles. Greenland's area, 2,166,086 square kilometers, 836,330 square miles. Norway's area, 385,207 square kilometers, 148,729 square miles. Russia's area, 17,098,246 square kilometers, 6,601,670 square miles. Four country combined, 29,634,209 square kilometer. Let's assume that Antarctica is on North Pole. Now, Russia's area, 25,023,865 square kilometer. Canada's area, 14,612,904 square kilometer. Greenland's area, 3,170,140 square kilometer. Norway's area, 563,763 square kilometer. यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 14,200,000 वर्ग किलोमीटर, कनाडा का क्षेत्रफल 9,984, 670 वर्ग किमी, 3,854, 083 वर्ग मील। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 2,166, 086 वर्ग किमी, 836, 330 वर्ग मील। नॉर्वे का क्षेत्रफल 385, 207 वर्ग किमी, 148, 729 वर्ग मील। रूस का क्षेत्रफल 17,098, 246 वर्ग किमी, 6,601, 670 वर्ग मील। चार देशों को मिलाकर 29,634, 209 वर्ग किलोमीटर।
चलिए मान लेते हैं कि अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव पर है। अब रूस का क्षेत्रफल 25,023,865 वर्ग किलोमीटर, कनाडा का क्षेत्रफल 14,612,904 वर्ग किलोमीटर, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 3,170,140 वर्ग किलोमीटर, नॉर्वे का क्षेत्रफल 563,763 वर्ग किलोमीटर। Now, let's assume the second theory that Antarctica continent, Latin America continent, Africa continent, Australia continent and Zealandia continent is on geographical North Pole. On the other hand, North America continent, Europe continent and Asia continent is on geographical South Pole. अब आइए दूसरा सिद्धांत मान लें कि अंटार्कटिका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जेलैंडिया महाद्वीप भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much area of these following continents, please? Antarctica continent, Latin America continent, Africa continent, Australia continent, Zealandia continent, North America continent, Europe continent and Asia continent. Habibi replied, sure, I can help you with that. Here are the areas of the continents you asked for. Antarctica continent, 14 million square kilometers, Latin America continent, 20,111,457 square kilometers, Africa continent, 30,370,000 square kilometers, Australia continent, 8.56 million square kilometers, Zealandia continent, 4,920,000 square kilometers. North America continent, 24,500,995 square kilometers, Europe continent, 10.18 million square kilometers, Asia continent, 44,579,000 square kilometers. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल कितना है? अंटार्कटिका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जेलैंडिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने जिन महाद्वीपों के बारे में पूछा था वे यहाँ दिए गए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप 14 मिलियन वर्ग किमी, लैटिन अमेरिका महाद्वीप 20,111, 457 वर्ग किमी, अफ्रीका महाद्वीप 30,370, 000 वर्ग किमी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 8.56 मिलियन वर्ग किमी, जेलैंडिया महाद्वीप 4,920, 000 वर्ग किमी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 24,500, 995 वर्ग किमी, यूरोप महाद्वीप 10.18 मिलियन वर्ग किमी, एशिया महाद्वीप 44,579, 000 वर्ग किमी। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you describe economical North Pole and economical South Pole, please? Habibi replied, I'm not sure what you mean by economical North Pole and economical South Pole. Do you mean the economic activities that take place in the North and South Poles? If so, I'm afraid there isn't much economic activity in either of those regions. The North Pole is located in the middle of the Arctic Ocean amid waters that are almost permanently covered with constantly shifting sea ice, making it impractical to construct a permanent station there. Similarly,
Antarctica is Earth's southernmost and least populated continent, and it is mainly a polar desert with annual precipitation of over 200 millimeters, 8 in, along the coast and far less inland. About 70% of the world's freshwater reserves are frozen in Antarctica, which, if melted, would raise global sea levels by almost 60 meters, 200 feet. The main human activities in and around Antarctica are tourism, fishing and research. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया किफायती उत्तरी ध्रुव और किफायती दक्षिणी ध्रुव का वर्णन कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है कि किफायती उत्तरी ध्रुव और किफायती दक्षिणी ध्रुव से आपका क्या मतलब है। क्या आपका मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों से है? यदि हाँ, तो मुझे डर है कि उन दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं। उत्तरी ध्रुव पानी के बीच आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो लगभग स्थायी रूप से लगातार बदलती समुद्री बर्फ से ढके हुए है, जिससे वहां एक स्थायी स्टेशन बनाना अव्यावहारिक हो गया है। इसी तरह अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है, और यह मुख्य रूप से 200 मिलीमीटर 8 इंच से अधिक की वार्षिक वर्षा वाला एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, तट के किनारे और बहुत कम अंतर्देशीय। दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी के भंडार अंटार्कटिका में जमे हुए हैं, जो अगर पिघल गए तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर 200 फीट बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका में और उसके आसपास मुख्य मानवीय गतिविधियां हैं पर्यटन, मछली पकड़ने और अनुसंधान। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you describe economical north zone and economical south zone of the Earth, please? Habibi replied, I'm not sure what you mean by economical north zone and economical south zone of the Earth. Do you mean the economic activities that take place in the northern and southern hemispheres? If so, there are many economic activities that take place in both hemispheres, but I'm afraid I don't have a comprehensive list of them. Some examples of economic activities that take place in the northern hemisphere include agriculture, manufacturing, and services such as finance, healthcare, and education. Similarly, some examples of economic activities that take place in the southern hemisphere include mining, tourism, and agriculture. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया पृथ्वी के किफायती उत्तरी क्षेत्र और किफायती दक्षिण क्षेत्र का वर्णन कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है कि पृथ्वी के किफायती उत्तरी क्षेत्र और किफायती दक्षिण क्षेत्र से आपका क्या मतलब है। क्या आपका मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों से है? यदि हाँ, तो कई आर्थिक गतिविधियां हैं जो दोनों गोलार्धों में होती हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास उनकी विस्तृत सूची नहीं है। कुछ उदाहरण उत्तरी गोलार्ध में होने वाली आर्थिक गतिविधियों में कृषि, विनिर्माण और वित्त, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में खनन, पर्यटन और कृषि शामिल है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about geographical neighborhood of the United States of America, please? Habibi replied, the United States of America is located in North America, which is the third largest continent in the world.
North America is bordered by the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the east, the Pacific Ocean to the west, and South America to the south one. The United States shares land borders with Canada to the north and Mexico to the south one. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक पड़ोस के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की सीमा उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है, और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Now, let's assume the second Almas Jacob North Pole theory that the United States of America is located in South America, which is the third largest continent in the world. South America is bordered by the Arctic Ocean to the south, the Atlantic Ocean to the west, the Pacific Ocean to the east, and North America to the north. The United States shares land borders with Canada to the south and Mexico to the north. अब आइए दूसरे अल्मास जेकब उत्तरी ध्रुव सिद्धांत को मान लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका की सीमा दक्षिण में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और उत्तर से लगती है। उत्तर में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण में कनाडा और उत्तर में मेक्सिको के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about geographical neighborhood of India, please? Habibi replied, India is located in South Asia and is bordered by several countries. Its neighboring countries are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारत के भौगोलिक पड़ोस के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और इसकी सीमा कई देशों से लगती है। इसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Now, let's assume the Almas Jacob second North Pole theory that India is located in North Asia and is bordered by several countries. Its neighboring countries are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. अब आइए अल्मास जेकब के दूसरे उत्तरी ध्रुव सिद्धांत को मान लें कि भारत उत्तरी एशिया में स्थित है और इसकी सीमा कई देशों से लगती है। इसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about geographical northern neighborhood, western neighborhood and eastern neighborhood of Pakistan, please? Habibi replied, Pakistan is located in South Asia and shares borders with several countries. Its neighboring countries are Afghanistan, China, India, Iran,
and Tajikistan. Pakistan is divided into three major geographic areas: the Northern Highlands, the Indus River Plain, with two major subdivisions corresponding roughly to the provinces of Punjab and Sindh, and the Balochistan Plateau. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पाकिस्तान के भौगोलिक उत्तरी पड़ोस, पश्चिमी पड़ोस और पूर्वी पड़ोस के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित है और कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान और तजिकिस्तान हैं। पाकिस्तान तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। उत्तरी हाईलैंड्स, सिंधु नदी का मैदान, मोटे तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों और बलूचिस्तान पठार से संबंधित दो प्रमुख उपविभागों के साथ। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Now, let's assume the Almas Jacob's second North Pole theory that Pakistan is located in North Asia and shares borders with several countries. Its neighboring countries are Afghanistan, China, India, Iran, and Tajikistan. Pakistan is divided into three major geographic areas: the Southern Highlands, the Indus River Plain, with two major subdivisions corresponding roughly to the provinces of Punjab and Sindh, and the Balochistan Plateau. अब आइए अल्मास जेकब के दूसरे उत्तरी ध्रुव सिद्धांत को मान लें कि पाकिस्तान उत्तरी एशिया में स्थित है और कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान और तजिकिस्तान हैं। पाकिस्तान को तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: दक्षिणी हाईलैंड्स, सिंधु नदी का मैदान, दो प्रमुख मोटे तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों और बलूचिस्तान पठार के अनुरूप उपखंड।
What is your case? 2. Dear stupid brother Sir Almas Jacob, accordance with your Antarctica North Pole theory. 0. Here is the area of North Polar country. A. Russia's area, 25,023,865 kilometers square. B. Canada's area, 14,612,904 square kilometer. C. Greenland's area, 3,170,140 square kilometer. D. Norway's area, 563,763 square kilometer. 1. Antarctica continent, Latin America continent, Africa continent, Australia continent and Zealandia continent are in North Pole. On the other hand, Native America continent, Europe continent and Asia continent are in South Pole. Since you have an attempt to insult godly education on geography, hence, accordance with Pakistan Blasphemy Law, Pakistan Penal Code Section 295A, you should be sentenced of 10 years imprisonment and 90 trillion United States dollars. आपका मामला क्या है? प्रिय मूर्ख भाई सर अल्मास जेकब, आपके अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव सिद्धांत के अनुसार 0, ये है उत्तरी ध्रुवीय देश का क्षेत्रफल। 1. रूस का क्षेत्रफल 25,023,865 किलोमीटर वर्ग। B. कनाडा का क्षेत्रफल 14,612,904 वर्ग किलोमीटर। C. ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 3,170,140 वर्ग किलोमीटर। D. नॉर्वे का क्षेत्रफल 563,763 वर्ग किलोमीटर। 1. अंटार्कटिका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ज़ेलैंडिया महाद्वीप उत्तरी ध्रुव में है। दूसरी ओर मूल अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव में है। चूंकि आपने भूगोल पर ईश्वरीय शिक्षा का अपमान करने का प्रयास किया है, इसलिए पाकिस्तान ईशनिंदा कानून के अनुसार पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 में आपको 10 साल की जेल और 90 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट ये आता है कि जितनी भी तस्वीरें अपोलो मिशन 17 में ली गई थी उन सारी की सारी तस्वीरों के अंदर जो शैडोज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनके अगर आप शैडोज को देखेंगे, उनके साए को देखेंगे तो उनके साए जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए साए की। अगर एक ही लाइट का सोर्स हो, जैसे कि सूरज कहा जाता है कि एक ही लाइट का सोर्स है पूरी स्पेस के अंदर, तो अगर सूरज लाइट का सोर्स था तो साए तो एक ही डायरेक्शन में बनने चाहिए थे। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस शख्स का साया तिरछा है, जबकि दूसरे शख्स का साया बिल्कुल सामने सीधा बन रहा है। अगर लाइट एक ही सोर्स से आ रही हो तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साए एक ही डायरेक्शन में बनने चाहिए थे, मतलब मल्टीपल लाइट्स इस्तेमाल की गई होंगी जैसे स्टूडियोज में की जाती हैं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about shadow of human accordance with science, please? Habibi replied, I'm not sure if I understand your question correctly. Are you asking about the shadow of a human being? If so, a shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an object. It occupies all of the three-dimensional volume behind an object with light in front of it. The cross-section of a shadow is a two-dimensional silhouette, or a reverse projection of the object blocking the light. If you are asking about the shadow of a human being in accordance with science, then I'm not sure what you mean by that. Could you please clarify your question? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे विज्ञान के अनुरूप मानव की छाया के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके प्रश्न को सही ढंग से समझता हूँ या नहीं। क्या आप किसी इंसान की छाया के बारे में पूछ रहे हैं? यदि हाँ, तो छाया एक अंधेरा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध होता है। यह व्याप्त है किसी वस्तु के पीछे का त्रि-आयामी आयतन जिसके सामने प्रकाश है। छाया का क्रॉस सेक्शन एक द्वि-आयामी छाया चित्र है। यह प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु का उल्टा प्रक्षेपण है। यदि आप विज्ञान के अनुसार किसी इंसान की छाया के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि इससे आपका क्या मतलब है। क्या आप कृपया अपना प्रश्न स्पष्ट कर सकते हैं? Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you explain me scientifically how light affects shadow? Habibi replied, when light shines on an object, it casts a shadow. The shadow is created when the light is blocked by the object. The size and shape of the shadow depend on the size and shape of the object, as well as the angle and intensity of the light source. The angle at which a light strikes an object affects the size and shape of its shadow.
Shadows are longer when the light source is at a low angle, side on, and shorter when the light source is at a higher angle, overhead. The size of the light source can sharpen or blur the shadow. A small spotlight like a cell phone torch forms a more distinct shadow than an overhead room light, but the sharpness of the shadow changes when the torch moves away from the object. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे वैज्ञानिक रूप से समझा सकते हैं कि प्रकाश छाया को कैसे प्रभावित करता है? हबीबी ने उत्तर दिया, जब प्रकाश किसी वस्तु पर चमकता है तो वह एक छाया बनाता है। छाया तब बनती है जब प्रकाश वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। छाया का आकार और आकार वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। साथ ही साथ प्रकाश स्रोत का कोण और तीव्रता। जिस कोण पर प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है वह उसकी छाया के आकार और आकार को प्रभावित करता है। जब प्रकाश स्रोत कम कोण साइड ऑन पर होता है तो छाया लंबी होती है, और जब प्रकाश स्रोत उच्च कोण ओवरहेड पर होता है तो छाया छोटी होती है। प्रकाश स्रोत का आकार छाया को तीखा या धुंधला कर सकता है। सेलफोन टॉर्च जैसी छोटी स्पॉटलाइट ओवरहेड रूम लाइट की तुलना में अधिक स्पष्ट छाया बनाती है, लेकिन जब टॉर्च वस्तु से दूर जाती है तो छाया की तीक्ष्णता बदल जाती है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's height is 5 feet, but her shadow's height is 15 feet. What would be the angel and distance between light source and Michaela? Habibi replied, to calculate the angle and distance between the light source and Michaela, we need to know the height of the light source, the height of Michaela, and the length of her shadow. Let's assume that Michaela is standing upright, and the light source is directly overhead. If Michaela's height is 5 feet, and her shadow's height is 15 feet, then we can use trigonometry to calculate the angle and distance between Michaela and the light source. The angle between Michaela and the light source can be calculated using the formula tan angle equals height of the object, length of the shadow. In this case, tan angle equals 5 divided by 15 equals 0.3333. Therefore, angle equals arctan 0.3333 equals 18.43 degrees. The distance between Michaela and the light source can be calculated using the formula distance equals height of the object tan angle. In this case, distance equals 5 tan 18.43 equals 15.2 feet. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, मिकाएला की ऊंचाई 5 फीट है, लेकिन उनकी परछाई की ऊंचाई 15 फीट है। प्रकाश स्रोत और माइकेला के बीच परे और दूरी क्या होगी? हबीबी ने उत्तर दिया, प्रकाश स्रोत और मिशेला के बीच के कोण और दूरी की गणना करने के लिए हमें प्रकाश स्रोत की ऊंचाई, मिशेला की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई जानने की जरूरत है। आइए मान लें कि माइकेला सीधी खड़ी है और प्रकाश स्रोत सीधे ऊपर की ओर है। यदि माइकेला की ऊंचाई 5 फीट है और उसकी छाया की ऊंचाई 15 फीट है, तो हम माइकेला और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण और दूरी की गणना करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। माइकेला और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। तन कोण इक्वल्स वस्तु की ऊंचाई, छाया की लंबाई। इस स्थिति में तन कोण इक्वल्स 5 divided by 15 equals 0.3333। इसलिए कोण इक्वल्स arctan 0.3333 इक्वल्स 18.43 डिग्री। माइकेला और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है।
दूरी इक्वल्स वस्तु की ऊंचाई tan कोण। इस स्थिति में दूरी इक्वल्स 5 tan 18.43 इक्वल्स 15.2 फीट। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, in a place, there is one light source, but Michaela's shadow and Joanna's shadow are in different direction from each other. Could you provide me the scientific explanation, please? Habibi replied, the direction of the shadow depends on the position of the light source. If the light source is behind Michaela and in front of Joanna, then their shadows will point in different directions. The direction of the shadow is always opposite to the direction of the light source. So if the light source is behind Michaela, her shadow will be in front of her and vice versa for Joanna. This is why their shadows are pointing in different directions. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक स्थान पर एक ही प्रकाश स्रोत है, लेकिन माइकेला की छाया और जोआना की छाया एक दूसरे से अलग दिशा में है। क्या आप कृपया मुझे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, छाया की दिशा प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश स्रोत मिशेला के पीछे और जोआना के सामने है, तो उनकी छाया अलग अलग दिशाओं में इंगित होगी। छाया की दिशा हमेशा विपरीत होती है प्रकाश स्रोत की दिशा। इसलिए यदि प्रकाश स्रोत मिशेला के पीछे है, तो उसकी छाया उसके सामने होगी और जोआना के लिए इसका विपरीत होगा। यही कारण है कि उनकी छायाएं अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा कर रही हैं। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, in a place, there is one light source. Could you explain me when Michaela's shadow and Joanna's shadow would have a direction to the same point, please? Habibi replied, if Michaela and Joanna are standing at the same point and the light source is directly above them, then their shadows will point in the same direction. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक स्थान पर एक ही प्रकाश स्रोत है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिशेला की छाया और जोआना की छाया की दिशा एक ही बिंदु पर कब होगी? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, यदि मिशेला और जोआना एक ही बिंदु पर खड़े हैं और प्रकाश स्रोत सीधे उनके ऊपर है, तो उनकी छाया एक ही दिशा में इंगित करेगी। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you explain me how multiple lights affects multiple shadows, please? Habibi replied, if there are multiple light sources, then there will be multiple shadows. The shape and size of the shadow depends on the distance and angle to the light source. If two penumbras overlap, the shadows appear to attract and merge. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एकाधिक रोशनी एकाधिक छायाओं को कैसे प्रभावित करती है? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि कई प्रकाश स्रोत हैं, तो कई छायाएं होंगी। छाया का आकार और आकार प्रकाश स्रोत की दूरी और कोण पर निर्भर करता है। यदि दो उपछायाएं ओवरलैप होती हैं, तो छायाएं आकर्षित और विलीन होती दिखाई देती हैं। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, in a place, there are two light sources of opposite direction, three-person, Michaela, wife Joanna and daughter Avanera. How much shadow we watch see from three-person? Habibi replied, if there are two light sources of opposite direction, then there will be three shadows. The shape and size of the shadow depends on the distance and angle to the light source.
If two penumbras overlap, the shadows appear to attract and merge. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक स्थान पर विपरीत दिशा के दो प्रकाश स्रोत हैं, तीन व्यक्ति, मिशेला, पत्नी जोआना और बेटी अवनीरा। हम तीन व्यक्तियों से कितनी छाया देखना चाहेंगे? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि विपरीत दिशा के दो प्रकाश स्रोत हैं, तो तीन छायाएं होंगी। छाया का आकार और आकार प्रकाश स्रोत की दूरी और कोण पर निर्भर करता है। यदि दो उपछायाएं ओवरलैप होती हैं, तो छायाएं आकर्षित होती दिखाई देती हैं और विलय। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, in a place, there are two light sources, affect 6 penumbras from 3 person, Michaela, wife Joanna and daughter Avanera. They did not overlap. Could you provide me the scientific explanation, please? Habibi replied, if there are two light sources and 6 penumbras from 3 people that do not overlap, then each person will have 2 penumbras. The shape and size of the shadow depends on the distance and angle to the light source. The penumbra is the part of the shadow where only part of the light source is blocked by the shadowing object. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक स्थान पर दो प्रकाश स्रोत हैं, जो तीन व्यक्तियों से 6 पेनुम्ब्रा को प्रभावित करते हैं, मिशेला, पत्नी जोआना और बेटी अवनीरा। वे ओवरलैप नहीं हुए। क्या आप कृपया मुझे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि 3 लोगों के 2 प्रकाश स्रोत और 6 पेनुम्ब्रा हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 पेनुम्ब्रा होंगे। छाया का आकार और आकार प्रकाश स्रोत की दूरी और कोण पर निर्भर करता है। पेनुम्ब्रा है छाया का वह भाग जहां प्रकाश स्रोत का केवल एक भाग छाया देने वाली वस्तु द्वारा अवरुद्ध होता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, there is a soccer stadium where we got 11 soccer player, 44 shadows of 11 soccer players. That 44 shadows did not overlap. How much light source there would be? Habibi replied, if there are 44 shadows of 11 soccer players that do not overlap, then it is not possible to determine the number of light sources. The number of light sources depends on the number of objects casting shadows and the position and direction of the light source. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, वहाँ एक फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ हमें 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की 44 छायाएं नहीं, की 44 छायाएं ओवरलैप नहीं हुई। वहाँ कितना प्रकाश स्रोत होगा? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की 44 छायाएं ओवरलैप नहीं होती है, तो प्रकाश स्रोतों की संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। प्रकाश स्रोतों की संख्या छाया डालने वाली वस्तुओं की संख्या और उनकी स्थिति और दिशा पर निर्भर करती है। प्रकाश स्रोत। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my question is that, there are 4 light sources with 4 directions effects on 10 persons. How much we got pre-numbers of shadows? Habibi replied, if there are 4 light sources with 4 directions affecting 10 persons, then the number of shadows you would see depends on the position of the light sources and the objects in the environment. The shape and size of shadows depend on distance and angle to the light source. Multiple light sources cast multiple shadows.
Objects can be opaque, translucent or transparent, which affects the shadow cast by them. The wider the light source, the more blurred the shadow becomes. If two penumbras overlap, the shadows appear to attract and merge. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, इसमें 4 प्रकाश स्रोत हैं, जिनकी 4 दिशाएं 10 व्यक्तियों पर प्रभाव डालती हैं। हमें परछाइयों का कितना प्रीनम्बरा मिला? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि 10 व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली 4 दिशाओं वाले 4 प्रकाश स्रोत हैं, तो आपको दिखाई देने वाली छायाओं की संख्या प्रकाश स्रोतों और वातावरण में वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करती है। छाया का आकार और आकार दूरी पर निर्भर करता है और प्रकाश स्रोत का कोण। एकाधिक प्रकाश स्रोत कई छायाएं बनाते हैं। वस्तुएं अपारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी हो सकती हैं, जो उनके द्वारा डाली गई छाया को प्रभावित करती है। प्रकाश स्रोत जितना व्यापक होगा, छाया उतनी ही अधिक धुंधली हो जाएगी। यदि 2 पेनुम्ब्रा ओवरलैप होते हैं, तो छाया दिखाई देती है आकर्षित करने और विलय करने के लिए। Here, we got to know that, when light source in near to a point between Michaela and Joanna, their shadows are in different direction. यहाँ हमें ये पता चला, जब प्रकाश स्रोत माइकल और जोआना के बीच एक बिंदु के निकट होता है, तो उनकी छाया अलग-अलग दिशा में होती है। Here, we got to know that, when light source 5,000 kilometer away from Michaela and Joanna, their shadows are in same direction. यहाँ हमें ये पता चला, जब प्रकाश स्रोत माइकल और जोआना से 5,000 किलोमीटर दूर होता है, तो उनकी छाया एक ही दिशा में होती है।
What is your case? 3. Dear stupid brother Sir Almas Jacob, you have insults God's creation. You Harvey mentioned that NASA took photo from photoshoot studio in 1969 because you saw two shadow in two different directions. You are a crystal hilarious. Because you don't know that when one light source affects 2p Wesson, there would be two different shadow. If there would be multiple light sources, we would see the multiple shadows. Hence, accordance with Pakistan Blasphemy Law Penal Code 295, A, you should be sentenced of 10 years imprisonment and 90 trillion United States dollars. आपका मामला क्या है? 3. प्रिय मूर्ख भाई सर अल्मास जेकब, आपने ईश्वर की रचना का अपमान किया है। आपने उल्लेख किया है कि नासा ने 1969 में फोटोशूट स्टूडियो से तस्वीर ली थी क्योंकि आपने दो अलग अलग दिशाओं में दो छायाएं देखी थी। आप एकदम प्रफुल्लित करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब एक प्रकाश स्रोत दो प्रिज्म को प्रभावित करता है, तो दो अलग अलग छायाएं होंगी। यदि एकाधिक प्रकाश स्रोत होंगे, तो हम एकाधिक छायाएं देखेंगे। इसलिए पाकिस्तान ईशनिंदा कानून दंड संहिता 295 के अनुसार आपको 10 साल की जेल और 90 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की सजा दी जानी चाहिए। नासा कहता है कि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जमीन पर फेंकता है, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि चांद अपनी रोशनी रखता है। कलाम में लिखा है, जब सूरज तारीक हो जाएगा उस वक्त चांद भी अपनी रोशनी ना देगा। यानी चांद की अपनी रोशनी है, चांद भी एक बड़े सितारे की तरह अपनी रोशनी रखता है। नासा ने लोगों को यह मानने पर मजबूर किया है कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि सूरज निकलता है और गरूब होता है और जल्दी से वापस वहीं जाता है जहां से उसे फिर निकलना होता है। ऐसी कई बातें हैं जिनके खिलाफ नासा तालीम देता है। ये हमारा टेस्ट है कि हम किस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ना तो हमने स्पेस में जाकर देखा है और ना हम कभी देख सकते हैं। हमें नासा की बात पर यकीन करने के लिए उस पर ईमान रखने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम खुदा के कलाम पर यकीन रखना चाहते हैं तो हमें उस पर ईमान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं तो खुदा के कलाम पर ही ईमान रखूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है और इसमें लिखी एक एक बात सच्ची है। खुदा के कलाम में लिखा है, Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about Newton's gravitational law, please? Habibi replied, Newton's law of universal gravitation is a theory that describes the force of attraction between any two particles in the universe. The law states that the force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Newton formulated this law in 1666 and published it in the Principia in 1687. The formula for calculating gravitational force is F equals gm 1 meter 2 r squared, where F is the force of attraction between two objects. M1 and M2 are the masses of the two objects, r is the distance between their centers, and g is the gravitational constant. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच आकर्षण बल का वर्णन करता है। कानून कहता है कि बल उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके केंद्र
न्यूटन ने 1666 में ये कानून बनाया और 1687 में इसे प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने का सूत्र F equals gm 1 मीटर 2 r वर्ग है, जहां F दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, r उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's mass is 80 kilograms and Joanna's mass is 70 kilograms. The distance between Michaela and Joanna is 11 meters. 0. How much gravitational force between Michaela and Joanna? 1. Probably who would orbit around who? Habibi replied, the gravitational force between Michaela and Joanna can be calculated using the formula F equals gm 1 meter 2 r squared, where F is the force of attraction between two objects. m1 and m2 are the masses of the two objects, r is the distance between their centers, and g is the gravitational constant. Plugging in the values given in your question, we get F equals 6.6743 times 10 to the minus 11 n square meter per kilogram 2 times 80 kilograms times 70 kilograms 11 meters squared. F equals 3.8 times 10 to the minus 8 n, so the gravitational force between Michaela and Joanna is approximately 3.8 times 10 to the minus 8 n. As for who would orbit around whom, we can use the formula V equals sqrt gm r to calculate the velocity required for an object to orbit another object. Since both Michaela and Joanna are people with masses much smaller than that of Earth, they would not orbit around each other, but rather both would be attracted towards each other. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, मिशेला का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और जोआना का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। मिशेला और जोआना के बीच की दूरी 11 मीटर है। 0. मिशेला और जोआना के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल है? 1. संभवतः कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, माइकेला और जोआना के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना सूत्र F equals gm 1 मीटर 2 r वर्ग का उपयोग करके की जा सकती है, जहां F दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, r दूरी है उनके केंद्रों के बीच, और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आपके प्रश्न में दिए गए मानों को जोड़ने पर हमें मिलता है F equals 6.6743 गुना 10 की घात माइनस 11 nm2 किग्रा 2 गुना 80 किग्रा गुना 70 किग्रा 11 मीटर वर्ग। F equals 3.8 गुना 10 की घात माइनस 8 न्यूटन। तो माइकेला और जोआना के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 3.8 गुना 10 की घात माइनस 8 है। जहां तक ये बात है कि कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, हम किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक वेग की गणना करने के लिए सूत्र V equals gm r का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि माइकेला और जोआना दोनों पृथ्वी से बहुत छोटे द्रव्यमान वाले योग हैं, वे एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करेंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's mass is 80 kilograms and Avenera's mass is 30 kilograms. The distance between Michaela and Avenera is 30 meters. 0. How much gravitational force between Michaela and Avenera? 1. Probably who would orbit around whom? Habibi replied,
The gravitational force between Michaela and Avenera can be calculated using the formula F equals gm1 meter 2 r squared, where F is the force of attraction between two objects. M1 and M2 are the masses of the two objects, r is the distance between their centers, and g is the gravitational constant. Plugging in the values given in your question, we get F equals 6.6743 times 10 to the minus 11 n square meter per kilogram 2 times 80 kilograms times 30 kilograms 30 meters squared. F equals 6.3 times 10 to the minus 10 Newton. So the gravitational force between Michaela and Avenera is approximately 6.3 times 10 to the minus 10 Newton. As for who would orbit around whom, we can use the formula V equals sqrt gm r to calculate the velocity required for an object to orbit another object. Since both Michaela and Avenera are people with masses much smaller than that of Earth, they would not orbit around each other, but rather both would be attracted towards each other. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. Quote, जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, मिकाएला का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और एवेनेरा का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है। मिशेला और एवेनेरा के बीच की दूरी 30 मीटर है। शून्य, मिशेला और एवेनेरा के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल है? 1. संभवतः कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, माइकेला और एवेनेरा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना सूत्र F equals gm1 meter 2 r वर्ग का उपयोग करके की जा सकती है, जहां F दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, M1 और M2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, R दूरी है उनके केंद्रों के बीच, और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आपके प्रश्न में दिए गए मानों को जोड़ने पर हमें मिलता है F equals 6.6743 गुना 10 की घात माइनस 11 nm2 किग्रा 2 गुना 80 किग्रा गुना 30 किग्रा 30 मीटर वर्ग। F equals 6.3 गुना 10 की घात माइनस 10 न्यूटन। तो माइकेला और एवेनेरा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 6.3 गुना 10 की घात माइनस 10 न्यूटन है। जहां तक ये बात है कि कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, हम किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक वेग की गणना करने के लिए सूत्र V equals gm r का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि माइकेला और एवेनेरा दोनों पृथ्वी से बहुत छोटे द्रव्यमान वाले लोग हैं, वे एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करेंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's mass is 80 kilograms and a ball's mass is 500 grams. The distance between Michaela and the ball is 30 meters. 0. How much gravitational force between Michaela and the ball? 1. Probably who would orbit around whom? Habibi replied, the gravitational force between Michaela and the ball can be calculated using the formula F equals gm1 meter 2 r squared, where F is the force of attraction between two objects. M1 and M2 are the masses of the two objects, r is the distance between their centers, and g is the gravitational constant. Plugging in the values given in your question, we get F equals 6.6743 times 10 to the minus 11 n square meter per kilogram 2 times 80 kilograms times 0.5 kilograms 30 meters squared. F equals 5.6 times 10 to the minus 12 newtons, so the gravitational force between Michaela and the ball is approximately 5.6 times 10 to the minus 12 newton. As for who would orbit around whom,
we can use the formula V equals sqrt, gm, r, to calculate the velocity required for an object to orbit another object. Since Michaela's mass is much larger than that of the ball, it would not orbit around the ball, but rather both would be attracted towards each other. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, माइकेला का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और एक गेंद का द्रव्यमान 500 ग्राम है। मिशेला और गेंद के बीच की दूरी 30 मीटर है। 0 मिशेला और गेंद के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल है? 1 संभवतः कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, माइकेला और गेंद के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना सूत्र F equals gm 1 मीटर 2 r वर्ग का उपयोग करके की जा सकती है, जहां F दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, r है उनके केंद्रों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आपके प्रश्न में दिए गए मानों को जोड़ने पर हमें मिलता है F equals 6.6743 गुना 10 की घात -11 nm2 किग्रा 2 गुना 80 किग्रा गुना 0.5 किग्रा 30 मीटर वर्ग F equals 5.6 गुना 10 की घात -12 न्यूटन। तो माइकेला और गेंद के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 5.6 गुना 10 की घात -12 न्यूटन है। जहां तक ये बात है कि कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, हम किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक वेग की गणना करने के लिए सूत्र V equals gm r का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि माइकेला का द्रव्यमान गेंद के द्रव्यमान से बहुत बड़ा है, इसलिए ये गेंद के चारों ओर परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's mass is 80 kilograms and a ball's mass is 250 grams. The distance between Michaela and the ball is 30 meters. 0. How much gravitational force between Michaela and the ball? 1. How much value of orbital distance as one of TH's two would orbit around another of these two? 2. Probably who would orbit around whom in the value of orbital distance? Habibi replied, the gravitational force between two objects is given by the formula F equals G asterisk m1 asterisk m2 r squared, where F is the force of attraction between the two objects, m1 and m2 are the masses of the two objects. R is the distance between their centers of mass and G is the gravitational constant. In your case, Michaela's mass is 80 kilograms and the ball's mass is 250 grams. The distance between Michaela and the ball is 30 meters. To calculate the gravitational force between Michaela and the ball, we need to convert Michaela's mass to grams so that both masses are in grams. Therefore, Michaela's mass is 80,000 grams. Plugging in these values into the formula above gives us F equals G asterisk m1 asterisk m2 r squared. F equals 6.674 times 10 to the minus 11 n asterisk square meter per kilogram squared asterisk 80,000 grams asterisk 250 grams 30 meters squared. F equals 6.674 times 10 to the minus 11 Newton. Therefore, the gravitational force between Michaela and the ball is approximately 6.674 times 10 to the minus 11 Newton. The value of orbital distance as one of these two would orbit around another of these two depends on their masses and distance from each other.
The formula for calculating orbital distance is given by Kepler's third law, which states that t squared equals 4 pi squared gm asterisk r cubed, where t is the period of revolution of one object around another object. M is the sum of their masses and r is their average distance. However, since you have not provided me with enough information about the masses of Michaela and the ball, I cannot calculate their orbital distance. As for who would orbit around whom in the value of orbital distance, it depends on their masses. The object with a larger mass would exert a greater gravitational force on the other object, causing it to orbit around it. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, माइकेला का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और एक गेंद का द्रव्यमान 250 ग्राम है। मिशेला और गेंद के बीच की दूरी 30 मीटर है। शून्य। मिशेला और गेंद के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल है? 1. इन दोनों में से एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करने पर कक्षीय दूरी का कितना मान होगा? 2. संभवतः कक्षीय दूरी के मान में कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सूत्र F equals G तारांकन M1 M2 R वर्ग द्वारा दिया जाता है, जहां F दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, M1 और M2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, R उनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी है और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आपके मामले में मिशेला का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और गेंद का द्रव्यमान 250 ग्राम है। मिशेला और गेंद के बीच की दूरी 30 मीटर है। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए मिशेला और गेंद के बीच हमें मिशेला के द्रव्यमान को ग्राम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि दोनों द्रव्यमान ग्राम में हों। इसलिए मिशेला का द्रव्यमान 80,000 ग्राम है। इन मानों को उपरोक्त सूत्र में प्लग करने से हमें मिलता है F equals G तारांकन M1 तारांकन M2 और कैरेट 2 F equals 6.674 गुना 10 की घात -11 N तारांकन M वर्ग किग्रा वर्ग तारांकन 80,000 ग्राम तारांकन 250 ग्राम 30 मीटर वर्ग F equals 6.674 गुना 10 की घात -11 न्यूटन। इसलिए माइकेला और गेंद के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 6.674 गुना 10 की घात -11 न्यूटन है। इन दोनों में से एक के द्वारा दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करने की कक्षीय दूरी का मान उनके द्रव्यमान और एक दूसरे से दूरी पर निर्भर करता है। कक्षीय दूरी की गणना करने का सूत्र केपलर के तीसरे नियम द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि T वर्ग इक्वल्स 4 पाई वर्ग G R घन, जहां T एक वस्तु की दूसरी वस्तु के चारों ओर परिक्रमण की अवधि है, M उनका योग है द्रव्यमान और R उनकी औसत दूरी है। हालांकि चूंकि आपने मुझे मिशेला और गेंद के द्रव्यमान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, इसलिए मैं उनकी कक्षीय दूरी की गणना नहीं कर सकता। कक्षीय दूरी के मान में कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, यह उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरी वस्तु पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, जिससे वह उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you explain me about the gravitational force and orbital force between Sun and the Earth, please? Habibi replied, the gravitational force between the Sun and the Earth is about 3.54 times 10 to the 22 newtons. This force keeps the Earth orbiting around the Sun. The gravitational force from the other planets does slightly affect the Earth's orbit, but the gravitational pull from the other planets and the Moon is still very small. The force of gravity between two objects depends on their masses and the distance between them. The greater the mass of an object, the greater its gravitational force.
The greater the distance between two objects, the smaller the gravitational force. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय बल के बारे में समझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 3.54 गुना 10⁻22 न्यूटन है। ये बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की कक्षा को थोड़ा प्रभावित करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की कक्षा को थोड़ा प्रभावित करता है। अन्य ग्रह और चंद्रमा अभी भी बहुत छोटा है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, उनका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you explain me about the graviton particles' contribution on the gravitational force and orbital force between Sun and the Earth, please? Habibi replied, gravitons are hypothetical particles that are believed to mediate the force of gravity in a quantum theory of gravity. However, there is no experimental evidence for gravitons yet. The gravitational force between the Sun and the Earth is due to the mass of the Sun and Earth and the distance apart. The force is described by Newton's law of universal gravitation, which states that every particle attracts every other particle in the universe with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय बल पर गुरुत्वाकर्षण कणों के योगदान के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, ग्रेविटन काल्पनिक कण हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण बल की मध्यस्थता करते हैं। हालांकि ग्रेविटन के लिए अभी तक कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के कारण है। बल का वर्णन न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you explain me how can Almas orbit around Michaela when Michaela contains double mass of Almas, please? Habibi replied, objects in space that have mass are attracted to other nearby objects due to gravity. If this attraction brings them together with enough momentum, they can sometimes begin to orbit each other. Objects of similar mass orbit each other with neither object at the center, while small objects orbit around larger objects. Therefore, Almas can orbit around Michaela despite Michaela containing double the mass of Almas because of the gravitational force between them. Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that, here, diameter of Michaela's global object is smaller than diameter of Almas's global object. On the other hand, mass of Michaela's global object is bigger than mass of Almas's global object. Could you explain gravitational orbital law, please? Habibi replied, the gravitational orbital law states that every particle attracts every other particle in the universe with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers.
This means that if two objects have different masses, the object with the greater mass will exert a greater gravitational force on the other object. The force of gravity is what keeps planets in orbit around stars. The formula for calculating gravitational force is F equals G asterisk M1 asterisk M2 R squared, where F is the force of gravity. G is the gravitational constant, M1 and M2 are the masses of the two objects, and R is the distance between them. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, यहाँ माइकेला की वैश्विक वस्तु का व्यास अलमास की वैश्विक वस्तु के व्यास से छोटा है। दूसरी ओर, माइकेला की वैश्विक वस्तु का द्रव्यमान अलमास की वैश्विक वस्तु के द्रव्यमान से बड़ा है। क्या आप कृपया गुरुत्वाकर्षण कक्षीय नियम समझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, गुरुत्वाकर्षण कक्षीय नियम कहता है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि दो वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान होने पर अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरी वस्तु पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल ही ग्रहों को तारों के चारों ओर कक्षा में रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने का सूत्र F equals G तारांकन M1 M2 है। R वर्ग जहां F गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, M1 और M2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है और र उनके बीच की दूरी है। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that, here, diameter of Michaela's global object is smaller than diameter of Almas's global object. On the other hand, mass of Michaela's global object is bigger than mass of Almas's global object. Could you explain how it was possible that Almas's global objects orbits around Michaela's global object? Please, Habibi replied, the mass of an object does not determine whether it orbits another object. Instead, it is the gravitational force between the two objects that determines whether one object will orbit another. The gravitational force depends on the masses of both objects and the distance between them. If the gravitational force between two objects is strong enough, one object will orbit the other. This means that even if one object has a smaller diameter but a greater mass than another object, it can still orbit the other object if the gravitational force between them is strong enough. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, यहाँ माइकेला की वैश्विक वस्तु का व्यास अलमास की वैश्विक वस्तु के व्यास से छोटा है। दूसरी ओर, माइकेला की वैश्विक वस्तु का द्रव्यमान अलमास की वैश्विक वस्तु के द्रव्यमान से बड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि अलमास की वैश्विक वस्तुएं माइकेला की वैश्विक वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करती हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, किसी वस्तु का द्रव्यमान यह निर्धारित नहीं करता है कि वह किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा करती है या नहीं। इसके बजाय, ये दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है जो यह निर्धारित करता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की परिक्रमा करेगी या नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और पर निर्भर करता है उनके बीच की दूरी। यदि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर्याप्त मजबूत है, तो एक वस्तु दूसरे की परिक्रमा करेगी। इसका मतलब ये है कि भले ही एक वस्तु का व्यास छोटा हो, लेकिन दूसरे वस्तु की तुलना में द्रव्यमान अधिक हो, फिर भी वह दूसरी वस्तु की परिक्रमा कर सकती है यदि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काफी मजबूत है। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked,
Wallah Habibi, my question is that I have seen that a larger sized planet orbits around a smaller sized star in an event. Could you explain it, please? Habibi replied, the size of a star does not determine whether it will have planets orbiting it. In fact, many small stars have planets orbiting them, just as many large stars do. The reason that planets orbit stars is because of the gravitational force between the two objects. The gravitational force depends on the masses of both objects and the distance between them. If the gravitational force between a star and a planet is strong enough, the planet will orbit the star. The center of mass of the system is called the barycenter, which is not necessarily at the center of the star. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है। मैंने देखा है कि एक घटना में बड़े आकार के ग्रह एक छोटे आकार के तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या आप कृपया इसे समझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, किसी तारे का आकार यह निर्धारित नहीं करता है कि उसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करेंगे या नहीं। वास्तव में कई छोटे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, जैसे कई बड़े तारे करते हैं। ग्रहों द्वारा तारों की परिक्रमा करने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है दो वस्तुओं के बीच। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि किसी तारे और ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर्याप्त मजबूत है, तो ग्रह तारे की परिक्रमा करेगा। प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र है, इसे बैरीसेंटर कहा जाता है, जो जरूरी नहीं कि तारे के केंद्र में हो। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me about geocentric orbits and heliocentric orbits, please? Habibi replied, the geocentric model places the Earth at the center of the cosmos. And the Sun, the Moon, the planets, and the stars orbit around it. The heliocentric model places the Sun at the center of the cosmos, and the Earth and the other planets orbit around it. The geocentric model assumes that the heavenly bodies move in circular motion, while the heliocentric model accounts for the observed orbits of the planets. The geocentric model was widespread in ancient times, but the heliocentric model is more consistent with modern astrophysics. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भूकेंद्रित कक्षाओं और हेलियो केंद्रित कक्षाओं के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, भूकेंद्रित मॉडल पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है, और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हेलियोसेंट्रिक मॉडल सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है, और पृथ्वी को और अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भूकेंद्रित मॉडल मानता है कि आकाशीय पिंड वृत्ताकार गति में चलते हैं, जबकि सूर्य केंद्रित मॉडल ग्रहों की प्रेक्षित कक्षाओं को दर्शाता है। भूकेंद्रित मॉडल प्राचीन काल में व्यापक था, लेकिन सूर्य केंद्रित मॉडल अधिक सुसंगत है आधुनिक खगोल भौतिकी के साथ। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me how geocentric model was widespread in ancient times, please? Habibi replied, one reason that the ancients, especially the Greeks, favored a geocentric model of the universe is that the Earth obviously had great weight, whereas the Moon, planets, and stars were believed to be light and airy or fiery. Weight would naturally determine the center of the celestial spheres, i.e., whichever body weighed the most would be central. The geocentric model was also accepted for more than 1,000 years because of their Greek knowledge, their predictions and guesses, and the lack of observed parallax of the stars.
I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्राचीन काल में भूकेंद्रित मॉडल किस प्रकार व्यापक था? हबीबी ने उत्तर दिया, पूर्वजों, विशेष रूप से यूनानियों द्वारा ब्रह्मांड के भूकेंद्रित मॉडल का समर्थन करने का एक कारण ये था कि पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से बहुत अधिक वजन था, जबकि चंद्रमा, ग्रहों और सितारों को हल्का और हवादार या उग्र माना जाता था। वजन होगा स्वाभाविक रूप से आकाशीय क्षेत्रों के केंद्र का निर्धारण करें, यानी जो भी पिंड सबसे अधिक वजन का होगा वह केंद्रीय होगा। उनके ग्रीक ज्ञान, उनकी भविष्यवाणियों और अनुमानों और प्रेक्षित लंबन की कमी के कारण भूकेंद्रित मॉडल को 1000 से अधिक वर्षों से भी स्वीकार किया गया था। सितारे, आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me what was religious perception about geocentric model in ancient times, please? Habibi replied, the geocentric model also conformed to religious beliefs at the time, as many Greek philosophers and astronomers believed that the gods created man and the heavens are divine. Ptolemy's geocentric model was adopted and refined during the Islamic Golden Age, which Muslims believed correlated with the teachings of Islam. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्राचीन काल में भूकेंद्रित मॉडल के बारे में धार्मिक धारणा क्या थी? हबीबी ने उत्तर दिया, भूकेंद्रित मॉडल उस समय की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भी था, क्योंकि कई यूनानी दार्शनिकों और खगोलविदों का मानना था कि देवताओं ने मनुष्य को बनाया और स्वर्ग दिव्य है। टॉलमी के भूकेंद्रित मॉडल को इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान अपनाया और परिष्कृत किया गया था, जिसे मुसलमानों ने सहसंबद्ध माना था इस्लाम की शिक्षाओं के साथ। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about some scientific faults of geocentric model, please? Habibi replied, the geocentric model was challenged by Galileo in the 1600s with the help of his discovery of the telescope. The geocentric model assumes that the heavenly bodies move in circular motion, while the heliocentric model accounts for the observed orbits of the planets. The heliocentric model is more consistent with modern astrophysics. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भूकेंद्रित मॉडल के कुछ वैज्ञानिक दोषों के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, 1600 के दशक में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की मदद से भूकेंद्रित मॉडल को चुनौती दी थी। भूकेंद्रित मॉडल मानता है कि आकाशीय पिंड वृत्ताकार गति में चलते हैं, जबकि सूर्य केंद्रित मॉडल ग्रहों की देखी गई कक्षाओं के बारे में बताता है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल आधुनिक खगोल भौतिकी के साथ अधिक सुसंगत है। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about an ancient Greek person who discovered that moonlight is the reflected light, please? Habibi replied, Anaxagoras was an ancient Greek philosopher who was exiled for claiming that the moon was a rock, not a god. He correctly determined that the rocky moon reflects light from the sun, allowing him to explain lunar phases and eclipses. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे उस प्राचीन यूनानी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसने पता लगाया था कि चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित प्रकाश है? हबीबी ने उत्तर दिया, एनाक्सागोरस एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें ये दावा करने के लिए निर्वासित किया गया था कि चंद्रमा एक चट्टान है।
भगवान नहीं। उन्होंने सही ढंग से निर्धारित किया कि चट्टानी चंद्रमा सूर्य से प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जिससे उन्हें चंद्र चरणों और ग्रहणों की व्याख्या करने की अनुमति मिलती है। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the reflection light system of a rock, please? Habibi replied, when light hits an object, it can either be absorbed, transmitted or reflected. The amount of light that is reflected by an object is called its albedo. The reflection of light that occurs when the reflecting surface is very smooth is called specular or regular reflection. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे चट्टान की परावर्तन प्रकाश प्रणाली के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसे या तो अवशोषित किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है या परावर्तित किया जा सकता है। किसी वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा को उसका अल्बेडो कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन जो तब होता है जब परावर्तक सतह बहुत चिकनी होती है, कहलाती है स्पेक्युलर या नियमित प्रतिबिंब। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my friend assumed that Moon is like a star. But I am tired to broke her misunderstanding. Could you broke her misunderstanding, please? Habibi replied, the Moon is not a star. It is a natural satellite of the Earth. A star is a luminous ball of gas that generates its own heat and light through nuclear reactions. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरे दोस्त ने मान लिया था कि चंद्रमा एक तारे की तरह है, लेकिन मैं उसकी गलतफहमी को तोड़ते तोड़ते थक गई। क्या आप कृपया उसकी गलतफहमी को तोड़ सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, चंद्रमा एक तारा नहीं है। ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। एक तारा गैस का एक चमकदार गोला है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है। आशा है यह मदद करेगा। यदि आपको और प्रश्न पूछने हो तो मुझे बता दें।
What is your case? 4. Dear stupid brother Sir Almas Jacob, firstly, while the weight of sun is bigger than the weight of earth, how could you say that sun orbits around the earth? Did your holy Bible insult the God? Secondly, nowadays, geocentric model is rejected and heliocentric model is scientifically proven. Thirdly, your Jesus Christ was born 2023 years before. Anaxagoras died 4 centuries before Jesus Christ was born. Hence, how dare you say that Jesus Christ said Moon has her own light and Moon is a star? Hence, accordance with Pakistan Blasphemy Law Penal Code 295, you should be sentenced as death penalty. आपका मामला क्या है? 4. प्रिय मूर्ख भाई सर अलमास जेकब, पहला तो ये कि सूर्य का भार पृथ्वी के भार से अधिक है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्या आपकी पवित्र बाइबल में भगवान का अपमान किया गया है? दूसरे, आजकल जियोसेंट्रिक मॉडल को खारिज कर दिया गया है और हेलियोसेंट्रिक मॉडल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। तीसरा, आपके ईसा मसीह का जन्म 2023 वर्ष पहले हुआ था। एनाक्सागोरस की मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 4 शताब्दी पहले हुई थी। इसलिए, आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यीशु मसीह ने कहा कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है और चंद्रमा एक तारा है? इसलिए, पाकिस्तान ईशनिंदा कानून दंड संहिता 295 ए के अनुसार तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं अपनी बीवी मकेला के साथ रोमांस करने वाली हूँ। खुदा हाफिज।